नोटिफिकेशन चली गई क्या? यप, सैड। वापस ना आ जाए अब कौन? नोटिफिकेशन। मे बी वापस चली जाए, देखते हैं। मंजित है इधर? हेलो हेलो। यश क्या कर दिया हरकत? अगर लाइव नोटिफिकेशन में एक और आती है ना तो डिलीट कर देना, ठीक है? नहीं। ऑलराइट डैम्बो, वी आर लाइव। ओके। पब्लिश ही करना पड़ेगा। हम्म। कुछ नहीं, मैंने कर दिया, बाद में बताता हूँ। पब्लिश, डायरेक्ट व्यू। ओह अच्छा, समझ गया। आ रही है, ठीक है। डैम्बो लाइव कर दे। यस। कैन यू सी? आई कैन, आई कैन। तो मार्केट ब्रेथ से शुरू करते हैं। हम्म। अगर हम देखें तो निफ्टी 500 सब तो प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हुए हैं सब हम्म। सारे। बट दिस कैन बी जस्ट ए पुल बैक आफ्टर अ ब्रेकआउट। बट यस, तो मोस्ट लाइकली हम मंडे को पोजिशंस नहीं लेंगे अगर हमको पीक सेटअप नहीं दिखते हैं तो। ऐसा हाँ। कोई पीक सेटअप। तो बाकी अगर हम स्मॉल भी देखें वो भी प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुए। ऐसा कोई हम्म। मेजर सेलिंग नहीं है, बट स्टिल ठीक है। एमबीआई भी 150 ही है। सो या वेरी सिलेक्टिव। अगर इसको जाने ऊपर मे बी इट जस्ट एंगल दिस मे बी इफ दिस नॉर्मल पुल बैक। बाकी देखते हैं। हम्म। ठीक है। Where can I start trading as a beginner? Where did you study trading from? Uh, I learned from YouTube. Mainly, everything I have learned is from YouTube. You can visit our channel. We have a playlist there for basics on forex trading. This session is particularly about stocks. So, तो सर्किट है। black box. ये हम्म, 5% है, I think. हाँ। छोड़ दो ना फिर। डम 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 डी डम डम। राम की राम की इंफ्रा। ये डाला ओके। ट्रैकिंग में। अच्छा। ओह ओके। ठीक है, टाइटनेस अच्छा ही है। नॉट बैड। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट विक, पर ये चल सकता है डानी पावर में भी। ये भी ट्रैकिंग में डाला है बट 30th को इतना अर्निंग्स है डमो। इतना कुछ खास नहीं है। बेस 30th को अर्निंग्स है तो नहीं कर सकते ना, आई थिंक लाइक। एक सेकंड। ओके। ओके। ओह, नेवर माइंड।
डैम्बो इज AFK, किसी का क्वेरी है दे कैन आस्क, टिल देन मैं आंसर कर दूंगा, कर सकता हूँ तो आई मीन कर ही सकता हूँ। बैक। हेलो। प्रेस्टीज, जेमार नहीं, BML still good. VML, आजाद इंजीनियरिंग, वीकली बेस, पराग मिल्क। इसमें कुछ नहीं होगा मोस्टली। MFSL, मच। MFSL देखना पड़ेगा, पता नहीं क्यों नीचे आ रहा, देखा नहीं बहुत टाइम हो गया। टाइम तो हो गया काफ़ी देखे हुए उसको। कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो। ब्रोज, वारे इंस्टा पे स्टोरी डाल दे भी लाइव। ओके 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 ओके, आई विल डू दैट। ओ शिट, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, अभी डाल देते हैं। ये सारे सर्किट स्टॉक्स क्यों आ रहे हैं? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस। तो चल नहीं गया ऑलरेडी? ये पुल बैक चाहिए इसमें थोड़ा, उसके बाद देखेंगे। ये अच्छा है वो। बिग बेस डाउन भी है थोड़ा, आई मीन ठीक है, सेक्टर चल रहा है प्राइवेट बैंक्स। फेडरल बैंक क्या चला? One second. No, my bad. Story. ब्लू स्टोन एक और है ओके, जो ट्रैकिंग में ब्लूस्टोन तो, डाला। इसमें ब्लूस्टोन भी चल राइट गया। साइड पुल बैक दे दे तो मस्त हो जाएगा ये। वीकली में ऑलरेडी अच्छा ही है, डेली में अच्छा है।
Let's see. Good setup, blue steel. Three more hearts. लिंक क्या चला? इसके अर्निंग्स है, वैल्यू आ चुका है। प्लांटा भी डाला है ट्रैकिंग में। अटलांटा या हो सकता है पॉज कर दे मे बी थोड़ा और मे बी बस सब डाउन ही है। हाँ ट्रू वोल्टास भाई, स्टेज 1 बेसिक्स देख, टाटा आउटलुक कौन सा महंगा है ये भी। वोल्टास इसमें क्या है तो बहुत डाउन बेस भी है नहीं नहीं, स्विंग के लिए नहीं देख, बस वैसे ही देख। इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं, ये महंगा है लेकिन। बुर्ज खलीफा में एसीज ये सब, एयर कंडीशनिंग रूम सब यही चलाते हैं। क्यूटास बैक देखे सीधो ऊपर, ये रीटेस्ट अच्छा। एससीआई सबसे ज़्यादा था, सामान क्या उठा है? सम्मान सम्मान कैपिटल बहुत चल गया है भाई हम्म, बूम हो गया एकदम बट वो अलग बात है कि ऑल टाइम ऐसे स्टिल बहुत ज़्यादा डाउन है व्हाट आर द फिल्टर्स फॉर स्क्रीनिंग हम मल्टीपल स्कैन्स करते हैं ये आपको वो आप ऊपर भी स्क्रॉल filter out है। करोगे तो लाइक इफ़ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड द स्कैन्स यहाँ पे ऑल डाटा है, स्कैन all the सारे scans स्कैन। are posted here which are being used right now so you can check from there yeah लास्ट स्कैन करते हैं, क्वेरीज लेते हैं इसके बाद। ज़्यादा स्टॉक सेटअप नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है और एक दो ऐसे ही भी मिले जो वो फुली रेडी नहीं है, एंड मार्केट ब्रेथ भी नीचे है तो। प्रीमियर में आई एम एक्चुअली ट्रैकिंग दिस क्या कहते हैं मॉशिप मॉशिप हैड अर्निंग्स ना तो देख रहा हूँ उसको अगर स्मॉल गैप अप होता है तो ट्राई करूँगा देखते हैं अभी कुछ नहीं, तो यही है ट्रैकिंग में। ओके रैम की मंडे नोट रेडी होगा मोस्ट लाइकली। रैम की है क्या? सूर्य डे में पुल बैक चाहिए। यप एक्चुअली यहाँ भी ले सकते थे किसी, ये जो यहाँ जोन है, या वही बट मैं डेली में भी देखा मैं इसमें यस पुल बैक चाहिए। राइट हम्म साइड बना चाहिए, ये बस ट्रैकिंग है, बस बाकी सब ट्रैकिंग। ये कौन सा है डेली में हाँ डाटा डाटा पैटर्न्स थॉट्स हम भारत फौज अभी देखता है ये पेस डिजिटेक
सब में बस राइट यही, साइड चाहिए इसको, मे बी बस पॉज। यही है कि मे बी ये चले, बट या यू कैन ऑल्सो अवॉइड दिस इफ आपको नहीं ट्रेड करना, या क्योंकि मार्केट ब्रेक है तो जरूरत नहीं एग्जीक्यूट करने की। यप 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 यप, ट्रू। आई मीन दिस इज़ अ डिसेंट सेटअप, बट कोई सेक्टर वो नहीं है, हम्म, तो नो आइडिया। तो क्वेरीज लेते भारत फोर्ज देख लो, भारत फोर्ज का है क्वेरी। स्विंग करना है क्या आपको? स्विंग करना है या ले रखा है इन्वेस्ट करना है, क्या करना है? इसका तो अर्निंग्स भी ड्यू है, पता नहीं कब है। अर्निंग्स नेक्स्ट मंथ है। या नेक्स्ट मंथ। स्विंग लेना है या लिया है? लेना है आई वुड से, आई थिंक। आई वुड से एक राइट साइड में भी और चाहिए थोड़ा। नहीं है, ये इसमें स्विंग नहीं है, या इसमें कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, स्विंग हमारा सेटअप तो नहीं है, तो यस। हाँ, तो अगर इसमें कुछ लेना है तो यू कैन अवॉइड, क्योंकि इसमें सेटअप एक्चुअली नहीं है अभी, अभी के लिए नहीं है। या या यहाँ पे एक बेसिंग बन सकता है, मे बी उसके बाद ब्रेकआउट होगा या कुछ हो करेगा, हम्म मे बी अर्निंग्स देख देख सकते देखते हैं, हैं। ऐसा आएगा। आई मीन ये तो है भी स्लो मूवर ही, तो वैसे भी धीरे ही हम्म, चलता है। बट आई वुड से कि डिफेंस पे आप यहाँ थोड़ा पे नहीं है ध्यान दे कुछ। सकते हो। इधर सेटअप नहीं है बट डिफेंस देख सकते हो। आई डोंट नो, मेरे को डिफेंस पे थोड़ा सा है। 3000 रुपीज़ रिकवर करना है, कुछ बताओ भाई। हम्म सबसे पहले तो आप थोड़ा कैपिटल अपना कैपिटल कितना? माइंडसेट ठीक कर लो। कैपिटल, पहले आप बताओ कैपिटल कितना है, और माइंडसेट आप ठीक रखो। अगर आपका लॉस रिकवरी वाला माइंडसेट है तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे, यू नो। तो मे बी थिंक ऑफ इट एज अ एक्सपेंस, नॉट एज अ लॉस, मतलब इफ़ यू गेट व्हाट आई मीन। पहले आप कैपिटल पे देख लो, आप परसेंटेज टर्म्स में अगर वो ज़्यादा है तो अलग बात है। रिकवर आप तभी कर पाओगे अगर आप एक सिस्टम फॉलो करोगे। आप फिक्स रिस्क, मतलब 1% करते हो या 2% करते हो, जो भी है, जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अनेबल टू फाइंड द स्क्रीनर्स, ये लिंक्स ये भेजे हुए हैं यहाँ पे, आप ऊपर देख लो। यू कैन स्क्रॉल अप MK एंड यू कैन क्लिक ऑन देम। जारो का IPO लगा था 14K से 11.6K। ओ ओके, आपका उसमें लॉस है। नैम्बो आर यू हियर? हेलो। यस यस। जारो देखो जरा, जारो जारो IPO, आई थिंक जारो तो LG के साथ ही आया था। नहीं, LG से पहले आया था, LG से पहले आया था। तो पता नहीं मीन्स। जारो तो यार देखना पड़ेगा क्या कंपनी है नॉल। MK, ये वेट अ मिनट, you can open this link and if you scroll down you will get the stocks name, RVNL for investing। ठीक है, अभी देख लेगा। RVNL एक्चुअली लेवल पे ही है, आई थिंक 0.5 पे ही है। 718 पे एग्जिट किया है, ओके। ठीक है, फिर तो आप एग्जिट कर दिया तो इट्स फाइन। RVNL। जारो को स्टडी करना पड़ेगा एक्चुअली, लाइक यू नो व्हाट बिजनेस क्या है वगैरह वगैरह। IPO देखते हो ना, पहले तो आप देखो GMP जरूर देखना। लोग बोलते हैं ना GMP देख के नहीं करना चाहिए, GMP आपको देखना ही चाहिए। GMP से आपको दिखेगा डिमांड, यू नो। देन उसके बाद ऑब्वियसली वैल्यूएशन आप देखो, देन बिजनेस कैसा है।
ये ठीक है जोन। या दिस आर्यन जोन अलग। इज गुड बट ये टेस्ट हो चुका है, तो या तो ये यहीं से बाउंस कर जाएगा आरवीएनएल, या फिर इट विल कम डाउन देयर हो सकता है 250। सुबह। व्हाट्स द यूज ऑफ दिस स्क्रीनर? वी यूज दिस स्क्रीनर टू फाइंड स्टॉक्स, जैसे इनसाइड बार स्टॉक्स मिलेंगे हमको, या फिर यू नो ये मेन दिक्कत है। वीसीपी जब तक सेटअप। ये स्विंग के लिए हम लोग ये स्कैनर यूज करते हैं बेसिकली। ये मेन दिक्कत। अगर ये ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। ये आरवीएनएल, आरवीएनएल को तो ऑर्डर्स भी मिले हैं बट वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है ढंग से। तो मॉनसून चल रहा है। यस, आई एम लर्निंग विच इज़ बेस्ट टू मेक ट्रेडिंग माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक्चुअली। मेन सोर्स आपको बनाना है तो आपको चाहिए बेसिकली कैपिटल। यू विल रिक्वायर लाइक 20-25 lakhs, तब तक आप मेन सोर्स नहीं बना पाओगे उसको। तो वहां तक भी मेन सोर्स मत बनाओ। या अभी के लिए पार्ट टाइम रखो, अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल, देन यू कैन मे बी एम फॉर दैट, बट ऑब्वियसली पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा। यू हैव अब टू। मल्टीपल सोर्स बनाओ, मेन सोर्स मत बनाओ एक ही। भाई जीएमपी देख के ही गया, 100 रुपये था जब किया, फिर 50 पे आया लास्ट डे बट नो लिस्टिंग गेन। ओ बट यस यस, वो देन बहुत है बीच में। देन जारो देखना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट वैल्यूएशन। यारो लेकिन मैं ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता। यारो इज एजुकेशनल सेक्टर। ओ या ओके ओके। एजुकेशन में, एजुकेशन तो चलता ही नहीं है, लाइक स्टॉक्स तो चलते ही नहीं है एजुकेशन वाले, ई लर्निंग वाले जो हैं। तो आपका थोड़ा सेक्टर का लोचा हो गया इधर। आई मीन दिस कंपनी स्टिल लुक्स बैक केस वालों ने लिया है। ओके। आई डोंट हैव 10-15 के ही है, देन आप यू कैन लर्न बेसिकली। थोड़ा लर्निंग पे या स्पेंड करो। मेन सोर्स आप नहीं बना पाओगे अभी, आपको कैपिटल लगेगा ही लगेगा। साउथ बैंक कैसा है अभी स्विंग के लिए? फुल आपको करेक्शन चाहिए, साइडवेज चाहिए थोड़ा। तो बहुत चल चुका है भाई। जारो थोड़ा है, प्रॉब्लम है आपको, लाइक सेक्टर का प्रॉब्लम है उसमें। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सेक्टर मतलब सेक्टर का है ही ऐसा कि वो चलेंगे ही नहीं, जैसे पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स नहीं चलते, ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं चलता। सेम गोज फॉर ई लर्निंग। ये थोड़ा ना। पोस्ट पोस्ट चल जाता है बट कम प्लेयर है बस। हाँ हाँ, जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा चला था वो अब वापस डाउन है, बट पोर्ट्स में टॉप नहीं प्लेयर्स चलता। टॉप प्लेयर्स है वो, हाँ। पोर्ट्स में टॉप प्लेयर ही चलते हैं, अडानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। बट ये भी आप देखो तो डाउन ही है। व्हाट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट नाउ? शुड आई इवन ट्रेड और लर्न ओनली पेपर ट्रेड, एंड टिल व्हेन? पेपर ट्रेड तो यार पर्सनली आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन, बट अगर किसी को सिस्टम सीखना है कि हाउ टू एग्जीक्यूट बाय सेल कैसे करना है, देन आप पेपर ट्रेड में भी आप कर सकते हो कि चार्ट सीखने के लिए। बट ओवरऑल उसका ज़ीरो इम्पैक्ट लगता है मुझे इन योर ट्रेडिंग। इट हैज़ ज़ीरो इम्पैक्ट, बिकॉज जब तक आप डरोगे नहीं पैसे खोने के लिए तो आप नहीं सीखोगे। थैंक्स भाई। कितने बजे आते हो रोज वीसी? वी डू लाइक ऑल्टरनेटिव, हम आते हैं 7 बजे एवरी ऑल्टरनेटिव डेज। जैसे आज संडे है तो वी विल कम ऑन ट्यूसडे ऑन 7 PM सेम टाइमिंग। व्हाट्स द टारगेट रिटर्न आई शुड प्लान पर मंथ इफ ट्रेडिंग? 3-4%। वो भी आपको हर महीने नहीं मिलेगा। 3-4% इज़ वेरी गुड पर मंथ। व्हाट्स योर व्यू ऑन निफ्टी फॉर मंडे, बुलिश और बेरिश? डायमंड निफ्टी देख लो। आई मीन हम करते नहीं है बट ठीक है। बेरिश ही अभी तो है। आपका देखो कोटक बैंक का अर्निंग्स आया है तो आपको थोड़ा वोलेटिलिटी मिलेगा। बैंक निफ्टी आई थिंक गैप डाउन हो सकता है, देखते हैं। थोड़ा इस पे प्रेशर आएगा क्योंकि बहुत बैड अर्निंग्स है कोटक का। बाकी मैं करता नहीं बट हाँ, आई नो आइडिया फॉर तो मे बी निफ्टी। वो अर्निंग्स रिएक्शन आपको दिख जाएगा मंडे। मैं स्टॉक्स में करता हूँ। आई मीन हर्डल जोन के पास ही है निफ्टी भी।
तो पुल बैक ले पीडीएल, सकते क्या भाई? हाँ पीडीएल लोग दे भी सकता है, बेरिश। यस यस यस। डेली से देखो तो थोड़ा सा बेरी मतलब ट्रेंड वाइज तो ऑब्वियसली बुलिश ही है, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश व्हाट्स है द इसको हर्डल रेट। जोन? हर्डल जोन वही आप रेजिस्टेंस मार्क कर लो ना, आप ये 26,000 के आसपास पकड़ लो, आप रेजिस्टेंस है 26,000, 26,100। प्रीवियस ऑल टाइम वहाँ गैप भी आपको दिखेगा, गैप्स आर दिस रेजिस्टेंस। सपोर्ट जोन ये पकड़ लो। ये सेक्टर का पता नहीं था, मैंने सोचा लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा, बैड एक्सपीरियंस बट लर्न समथिंग। यस यस, इट्स ओके, आप वो पैसा रिकवर हो जाएगा। आप वो वैसा माइंडसेट मत रखो कि आपको पैसा रिकवर करना है, आप वो हो जाएगा। लॉस सब करते हैं, मैंने भी किया है लॉस, मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस किए हैं। तो वैसे आप सोचोगे तो आप टिक नहीं पाओगे, तो आप आगे बढ़ो, लाइफ गोज ऑन। इंट्राडे टारगेट्स क्या रखने चाहिए? इंट्राडे टारगेट्स मतलब कि आप रिस्क रिवॉर्ड पूछ रहे हो या अच्छा प्रॉफिट टारगेट्स बोल रहे हो? प्रॉफिट टारगेट्स तो आप देखो, रियलिटी तो ये है, आप हर दिन नहीं कर सकते प्रॉफिट, बट 1% ठीक है, 1%, 0.5, 1% ठीक है, बट हर दिन नहीं होता, तो आपका 1% हो सकता है बनेगा, नेक्स्ट डे लॉस होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लॉस होगा। तो हाउ डू यू डिटरमाइन द अमाउंट यू शुड टेक इन अ ट्रेड? व्हाट अमाउंट परसेंटेज अमाउंट ऑफ योर कैपिटल? रिस्क, आरटीडी रिस्क। रिस्क पर ट्रेड। इफ यू हैव अ लाइक 1 या 2 लाख कैपिटल है, देन यू डू आइदर 1%, 0.75%, वो आपके ऊपर है कितना आप झेल सकते हो। फॉर 10-15 की कैपिटल 1%, आ कर सकते दस देखो, 10-15 हज़ार से आप देखो सिर्फ लर्न नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, 1% तो कुछ भी नहीं है ना। तो लर्न करने पे फोकस करो, मेनली आप ये फोकस करो कि इफ़ आई वांट टू ग्रो दिस मनी, तो मैं इसको कैसे फर्स्ट, तो आप मतलब सबसे पहले तो सरवाइव करना है। इस पैसे को सरवाइव कर सकते हो तो आप मतलब कंसिडर कर सकते हो कि मैं थोड़ा और कैपिटल लाऊं या सेव करके और डालूं। हैं। टेन मेन गेम फिफ्टीन है के सर्वाइवल। हाँ, क्या बोल रहा है वो? 10-15 के में रिटर्न बनाओ तभी लगाओ। हाँ वो भी 6 मंथ स्ट्रेट एटलीस्ट। हाँ, आपको सरवाइव करना चाहिए। इफ़ यू कैन सरवाइव ऑन अ 10-15 थाउजेंड कैपिटल एंड बेसिकली थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट बना सकते हो, जो भी है जितना भी है, देन इट इज़ फाइन। मेन फोकस है आपका, सीखो पहले आप, क्योंकि होता क्या है ना कि इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब पे सब दिखा रखा है कि 50,000 से ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग, लेकिन आप आरपीटी नहीं देखते हो, आप वो ये नहीं देखते कि आप वो रिस्क कितना कर रहे हैं। वो अफोर्ड कर पूरा सकते हैं लेकिन हो सकता है आप नहीं कर पाओ, है ना? तो वो प्रॉब्लम है। उनका कैपिटल है 50,000 मान लेते हैं, और वो मतलब प्रॉफिट दिखा रहे हैं 2-3 हज़ार के, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे आता है, वो ऐसे नहीं आएगा। यू नो तो एंड सोटिनो आपका क्या कहते हैं, परसेंटेज कैपिटल बेसिकली देखो रिस्क पे है, एंड आपका एपेटाइट कितना आप हैंडल कर सकते हो। विच इज़ बेटर, ईएमए और एसएमए? ये डैमो बताएगा। डैमो बताओ, विच इज़ बेटर, ईएमए और एसएमए अकॉर्डिंग टू यू? दोनों सेम है। कोई हाँ, भी यूज़ कर लो, ये में ज़्यादा फास्टर है वो कर लो। ऐसे में डैमो स्लो है। एसएमए करता है। हम्म, आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉर लर्निंग आई वुड से 1:2, एंड थोड़ा आप ग्रो होने लगो तो 1:3। स्विंग में तो देखो होल्ड करना ही सीखना चाहिए, बट ठीक है, अभी मार्केट ऐसा है तो 1:2 इज़ फाइन। कैन यू गिव मी सम मोर इंसाइट इनटू रिस्क पर ट्रेड, मे बी थ्रू एन एग्जांपल? नैमो, वैसे इसके आई थिंक चैनल पे वीडियो भी है, बट वही ठीक है, मान लो थोड़ा आप। सा ब्रीफली मतलब हल्का सा समझा दे शॉर्ट में। आपको चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगा, लाइक यू कैन
क्लिक ऑन द लिंक अभी यहाँ भेजा था मंजीत ने, यहाँ से आप विजिट कर लो एंड प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में यू विल फाइंड स्विंग ट्रेडिंग। सिंपल है। ये डेमो आपका बता भी रहा है, सैलरी सुन मान लो। लो 100,000 है, ठीक है, 1% उसका होगा 1K ऐसा। हम्म सेम गोज फॉर एनी अदर अमाउंट। मान लो आपका हम्म 10,000 है, हाँ तो आपका होगा 100 बस। आप कर भी सकते हो जैसे आपको कर वन Sorry, परसेंट ऑफ। could you come again? 1 minute. In this case that you're taken, you have a capital of 1 lakh. Hi, I'm sorry now. I had the question. हाँ So, in you're saying 1% of your capital should be the risk or the downside. कि अगर आप यस, loss करते हो, अगर आपका द मैक्स stop loss लिमिट। hit होता है, तो this is the amount you will lose. Is हम्म that the correct way of looking at it? यप यप। But that changes depending on the trade, right? You take. नो, ऑल Tighter the stop यू loss, कैन हैव the larger the डायनामिक और capital you can deploy. ऐसा? यू कैन हैव बोथ डायनामिक और फिक्स रिस्क। डायनामिक मतलब let's say I have these three stocks, okay, for example, and what people do is, let's say I like this setup more, they risk more here. Let's say they don't like this setup, they risk less here, ऐसा मेरा फिक्स्ड होता है। स्टैटिक। या मतलब एक ही, या तो 0.7 या तो 1%। Okay. But स्टैटिक okay, ही the बेटर है। 1% of a capital should be the amount that you can afford to lose. That's per Yeah, on trade, right? each trade, yes. हम्म And you will make like, you can take max positions also, like TOR होता है, टोटल ओपन रिस्क करके। 3-4 पोजीशन आप ओपन कर रहे हो 1% रिस्क में, so your maximum drawdown will be 4%। 4%. Okay. Um, Also, this depends on how risky the trade is, right? So, अगर आपका risk to reward बहुत lopsided है, हाँ, तो वही है। मान लो तो आपके, for example, let me show you have you took 3-4 trades, your TOR will be, TOR is total open risk, okay, so it will yeah. be 3-4% since if you're risking 1%, okay, means if all your position hits stop loss, you will lose this much, and But your risk reward is 1:2, so your gain is correct. around 8% something, if all Yeah, your 6 to trades hit 8%, depending on. yeah. Yeah, fair. Okay, one more question around this, right? So now that we know कि so how should I put allocate my capital in a way जहाँ पे आपको सिर्फ 1% का ही risk हो, because 1:2 के अंदर भी you are basically not dividing up your all of your capital evenly, क्योंकि basically my point being कि अगर capital 1 लाख का है तो आप 1 लाख से trade नहीं कर रहे हो, right? You're trading with max to max 10,000 even with हम्म such risk हम्म reward, right? हम्म 10,000 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, से भी कम। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका स्टॉप लॉस परसेंटेज कितना है। इफ़ योर स्टॉप stop लॉस loss इज बिग देन percentage, आपका अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट छोटा हो जाता है। allocation कम होता है, हाँ allocation कम होता है। हाँ Generally 1% पे your allocation is like 20-25%, if हाँ And 4-5% Mhm. And 4-5%. stop loss, if you take 4% stop loss. Correct. So if One more. I Sorry. uh, Go on. so I take 1% risk, let's say I want to take this trade tomorrow, I take like 2% here, so my allocation on 1% will be around 30-40%, so that's why it's 0.7 to diversify, Sorry, how did you get 30% है? 30% कैसे आया? Sorry, come again. because your my stop loss is 2% here, हाँ, I don't take more than that, and I'm risking 1%, so when you go and put the order in, right, the buy quantity, it'll be correct, around 30, so I can take max how much, 3 stocks, so if I raise 0.7 I can take 4-5 ऐसा। correct, correct. One more question around this, right? So is this related to stocks, or can you also sort of translate it into futures? Or because I think the risk to reward or the change, the rate of change varies a lot. क्योंकि फिर The risk उसका बहुत management is variability की for बहुत। everything. For example, the risk management is for everything, options, futures. So in futures, I don't know how much is one lot, okay? Because there's a fixed margin Could for be a one lot. lot, right? Hmm. Yeah, so you have to see if your capital is capable for futures risk management. Hmm. Fair. I think So futures में 1 लाख 2 लाख होगा. depending on again the broker, तो वो broker decide करता है कितना lots होंगे, Yeah, right? whatever it But is. हाँ, Yeah, 1.5 to 2, but ठीक है, yeah. यप fair, ठीक है. This is helpful. Thanks. ओके The thing is, if you're buying futures 2 lakh, you have margin of 2 lakh.
your risk won't manage. You need at least three trades, okay, that margin to manage that risk. You got it, Yeah, right? and also, and also with futures, your the span also will change a lot depending on how volatile Yeah. it is because the broker will also dictate that. So if you're taking a trade for 2.5, you should have at हम्म least 4 or 3 because अगर वो downside चला गया तो आपका लंका लग जाएगी. हम्म So it's better to hedge it. yeah yeah Yeah, whatever you do is, manage your risk. At least 1%, 2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए if you're a very good risk taker. But 2% that of the changes if your view is long term, right? Or does that not change? क्योंकि आप ज़्यादा long लंबा term, drawdown देख सकते हो. long term के लिए allocation based. For trade, it is this way. Risk based. Okay, got it. ठीक है. yeah Because in long term, you don't have stop losses, right? You just hold हाँ, until the company, until if you're it breaking fundamentally even. change. Right. And even if they fundamentally change, you hope that the stock turns around. For me, it was Venus spikes. Yeah, sort of, yes, yes. So yeah, interesting, interesting. If Do you guys look at uh, Nifty and like the top 200 or top 300 stocks, or do you no, go in we small don't. micro? We avoid large caps for our swing trade. अच्छा, so you look at They move let's slow. say They move slow. हाँ fair. So mid cap and small cap and micro. Yeah, cap and small caps. Micro caps are like on and off क्योंकि वो थोड़ा illiquid हो जाते हैं तो we avoid. जैसे Bluestone is a recent IPO. So Yeah. it seemed like इसके अंदर I had a fundamental problem, but I don't think you guys consider that when you look at. No, we don't consider fundamentals in swing. But एक चीज तो consider करते हैं is earnings. Okay. So this is we call EP. हाँ हाँ If I see EP, for example, ये दिन earnings था, I would have avoided this trade. I missed this trade due to it, okay, because there was earnings. But the earnings came good, so that becomes EP, meaning yeah. a market has liked the earnings, so it is pushing the stock higher. So we call it episodic pivot. So Episodic that just pivot. adds on to the setup, like high probability of that. Fun fact: this company is yet to see its first profitable quarter, but I think that's the case with Zomato as well. But I'm not sure if I it was see the case. in But swing, I don't see all that. Okay, I just see price and I see an action volume. volumes. Yeah. Well, price For action. investing, if you say I will go invest, no, I won't. This was also one of the companies that came in my radar. So, but I was very This hesitant about setup is this. like many times. For example, this was one setup. Okay, we Uh, couldn't trade this. Like I said, there were earnings here. We don't trade hmm, on earnings because well, it could also go down, right? If the yeah. results were bad. Huh. And then there was setup here. Okay, this setup I traded. There were, let's say, one, two, three setups here. Okay, and then now there's And a now, setup forming but right now. now, what is your risk to reward in this? Because it seems like वहाँ पे से price rejection ले रहा है, again बार-बार We ऊपर test कर generally रहा है. 3 hour होता है, ठीक है? But nowadays I'm taking 1.5 2 hour, so it's market dynamic. So if the markets are good, I take How more do you RR. determine uh, So, dynamic range? एक बार कैसे करते हो? एक बार बताओगे जरा? so my way, it is more like how your stocks are performing after you take. Like for example, this whole year, right? If I see from here to it has been sideways, Yeah, true. no return almost. So here the stocks haven't performed well, except this rally. Here it Hmm. has performed well. So your portfolio feedback uh, tells you that, and your journey. When you go and journal, right? Like what was the result of the trade, you get to know. So you automatically discretionally you get an idea you have to you know what if I took a smaller RR and got out in No, but this month. okay, let's sorry. Coming back to the story of Bluestone, right? Um, Okay, uh, how do you determine a risk to reward in this once it breaks out? my risk reward is fixed. Okay, for example, let's say one risk, I don't risk more than 2% stop loss, right? So 1% risk, let's say. So my risk reward is अच्छा तो fixed. ऊपर भी you will look at the lowest या कहते हैं candle at which it started taking support that would be your basically resist stop loss and उसके बाद आप वहां से ऊपर उसका No, no. two See, times लोगे right. the entry is the only thing I see. So this is the entry. What people do, this is the breakout zone, right? Exactly.
So of this. okay, I also marked the same setup that you did, right, in my Okay. trading view. जो ऊपर अभी current के लिए. Okay. My question now, coming back to this setup, your base would be what? You will take the furthest base, that is 14th को आया था, या फिर you will take the nearest base to the line that you have drawn, जो कि शायद You आपका mean buy price, 17th को आया था. entry price you're saying? हाँ, entry price तो ये, but stop loss कहाँ Ye- रखोगे आप? Yeah, see. क्योंकि For example, this setup, right? I'm looking हाँ, for a pullback first. If it goes up here, I'm not taking it, like straight up. If it only क्यों pullbacks ये तो and the market ब्रेकआउट breath नहीं हुआ? improves, no, it hasn't break out, right? This is the breakout zone. मतलब बॉडी क्लोज चाहिए मेरे को तो सिंपली. See, नहीं? I'll show you a ready-made past setup. You will understand better. So this was a setup, right? I was tracking this. Here I was tracking. I wanted a pullback. It gave a pullback. Now I don't enter at, this exact breakout levels. I enter at close or at this pivots, previous day highs. So if you can see, this was a small day, right? Look at this whole day range. इसको हम बोलते हैं mini coil. I'll show you on daily. This was a small candle if you see. हाँ, because that was Mahura trading if I'm not wrong. No, this was not नहीं, morning that was trade. not. Morning trading तो यहाँ गई होता. अच्छा, ठीक है, my bad, sorry. I'm This wrong. was just a normal candle, okay? Okay, And the ADR is like 6%. मान ले, the average movement of this stock is 6%. 6%. And this did 2% movement only. So I just Okay. bought it at previous day high with 2% stops. Now, if this stop loss was bigger, right? I don't look for swings. Like swing low हो तो ही मैं वहाँ पे stop loss डालूंगा. It's just 2%. That's ठीक है, and got my you. entry is So, previous day high or this close. but then when did you enter? Because I आपने entered तो this अगले दिन. previous day high. Okay, At the previous day morning है. 9:15, I just punched it. And I'm out in Okay. one candle, 2 hour. Obviously, it अच्छा, went तो higher, you but don't take. ये तो कुछ भी नहीं हुआ. 3%. इसको तो आप but MTF भी नहीं कर सकते. see, my risk was 0.7, right? Here I risked 2% and entered here. So almost I made 1.5% here return on capital. But if you don't mind me asking, how big is the capital? Because 1.5% of it is, मतलब अगर आप 1 लाख भी डाल रहे हो, I'm assuming आप उससे ज़्यादा डाल रहे तो हो, 1 right? लाख में But होगा फिर 15,000 होगा बस 1500 सॉरी 1500, वही मैं कह रहा हूँ. तो I'm assuming कि आपने 10 लाख या उससे ऊपर डाला होगा to make this नहीं नहीं small. मेरा कुछ नहीं है भाई इतना नहीं है तो यार मतलब how is this making. दिस इज नॉट अ फुल यार टाइम I'm थिंग coming राइट from. Okay, I'm coming from a, क्या कहते हैं, fundamental sort of point of view, because जब मैं कंपनी में डालता हूँ तो I put a decent chunk, but इतना नहीं, 10-15 लाख नहीं, but हाँ, at least I try to make 25-30,000 to investment. But then I hold it to at 20-30% least. ऑफ अ लाख आई मीन नहीं नहीं नहीं, so I make 30,000 on an absolute basis. I try to make 25 to 30,000 पहला initial investment तो, and then I hold it at least till it gives me 100 or 50%. So सो हाउ मच डू that's यू where allocate into it I let's say have a each fixed part. I don't invest more than 50,000 in any stock, no matter how good I like no the no stock. I'm not asking the capital I'm asking the allocation like you allocate 20% 30% यार it's not very fixed in the sense कि मतलब I'm also working, right? So जब salary आती है तो that trading amount goes up, and then अगर कुछ बेच रहा हूँ तो that also increases the cash amount. So See, I just I like to told you slowly and steady. in this terms right for Hmm. example in this my margin was taken 30% here so Hmm. of my capital 30% was invested so अच्छा. it's like that. Yeah अच्छा, नहीं नहीं, okay fine. नहीं तो I take a stop loss of 2, क्या कहते हैं, 40%. तो अगर 40% कुछ गिर गया है, then fundamentally something has no changed no and I no can't see it. Then I'll I take a stop cut it. see my stop loss 2% here okay I just हाँ, allocated more because my capital is small right okay. so that is But 1% shouldn't risk shouldn't you take more risk because your capital is small? और your allocation is small. I'm sorry again, I'm getting confused कि अगर आप 10% भी डाल रहे Yeah, हो अपने capital का इस trade में. if I increase the RPT, then I cannot take other trades. With 1% max, I can take three stocks. So if I raise 2%, I'm done with two stocks only. Then I don't have anything to diversify.
but okay, sorry, I think where I'm getting confused is कि you basically cycle through the stocks a lot, right? So आप एक एक दिन में stock से entry exit ले सकते हो, एक हफ्ते में Yeah, ले सकते हो, right? this did TP in the intraday itself, you see. I hold it, I thought it'll give next day, but it did the same day. No, I hold it for a long term. Then I hold it for about at least 6 to 7 months minimum. I like to see at least 2 quarters results before I See, whatever you invest do, further. it's okay. If Uh, you're making like 30%, 40% a year, then you're doing well. yeah, it's not always 30-40%, no, because although some stories do well, but On capital, by some the way, stories do not well. on each stock game. On capital, I'm talking. 30-40 to nahi hai. Little less than that, Yeah, but because still. this year market gave like less than like 8-7% FD return. So if you're doubling that, let's नहीं say नहीं you're नहीं. 20%, हाँ then you're outperforming it, right? हाँ, then तो ठीक है. हाँ, I get that. That way you But look at I it. also I Uh, also look at it from the point of view of compounding, right? So if a stock is sort of giving me decent returns, I don't really like to book it. I keep on harping on it as long as the story is intact. So there have been stocks जो कि मैं 3 4 4 साल से hold कर रहा हूँ. See, That's done well for me. So compounding will, you can compound better with this as well. Like, for example, I'm not saying you want to follow this, but I'm just saying how it works. So I am for 3-4% a month. That is at 40 to 48% a year, right? So when right. your CAGR becomes around double every year Hmm. because you're But compounding then you every have to put quarter. in a lot of effort, right? I mean that's Yeah, again yeah, you have to goes put it. without That is saying. the thing, right? See, if you're So coming for 12% year and you are putting all this effort, you rather just put it in mutual fund and chill, right? Why do you want to trade? dude, some You, mutual funds don't really get there, but I get it. yeah, even in MFs, I made 16% in 3 months this year. Yeah, but then you have timed it now. मतलब sectoral wins Yeah, होगी I maybe. timed it, that's true. But you हाँ, have to time it if you again. want to make that rate. If I'm हाँ, just a SIP uncle, then I would be like 3-4% this month. I bought correct, here, correct. okay, these areas, हाँ, from these areas I bought. हाँ, obviously then तो you would Like have this. made some decent. Yeah. हाँ, So if this goes up, say this, they say 12% CAGR देता है, मतलब हर ईयर 12% तो देता है निफ्टी. ये 10% अगले साल दे दिया, मेरा 30% हो जाएगा. fair, fair, fair. I don't want to buy in these areas, I don't want to waste CAGR and all Hmm, those stuff. I हाँ, want a decent return. fair. And you get cash flow here as well. Investment, it is like long term, right? हाँ, मतलब you don't then your capital you don't rotate through your stocks so much, right? So you don't punch in so Yes, many trades. yeah. That's the point. मतलब So everything has a disadvantage that one can say. advantage, correct. I'm slowly trying to start my way into get my way into trading, but I think my mindset is still fixed on कि ठीक है भाई Yeah, long you term can में stick hold कर to सकता हूँ. investing only. Unless हाँ, if you're making 20-25% investing, I don't think you would want to trade. You just keep um, adding capital from your job and you're good. yeah, I think that was my initial plan, but then I tried some of my hands on gold and silver, and uh, to put it lightly, it मतलब went up मतलब berserk. So उसके बाद I thought कि अगर gold silver now and I there were fundamental reasons why I invested in gold and silver. Uh, and finally I've decided कि चलो let me try something else. So I've started looking at futures and options, but just for instance, I bought Kotak के calls Kotak and with? 2 days ago, Kotak Bank, and Acha. with the hopes कि earnings might turn up good. पर Yeah, I didn't actually. It is नहीं dog shit. बाप रे And भाई, it's मतलब I went through everything and उनके subsidiaries में जो हगा है क्या बताऊँ मैं. मतलब I looked at the second the page and I was earnings are like, dude, also bad actually. it's Kotak. yeah, so basically their company their initial consolidated entity has done bad, so around 11% down है उनका पैट, जबकि That उनका एक स्टैंडअलोन जो कंपनी है जो कोटक बैंक है जो सिर्फ अपनी कंपनी है, दैट इज ओनली डाउन 3%, बट सब्सिडरीज ने इतना खराब किया है कि द ग्रुप का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो -11% पहुंच चुका है. यू कैन I इमेजिन think कितना खराब हुआ है. they appointed a new banker, हाँ okay, हाँ, करेक्ट and करेक्ट. I'm telling that guy needs to go back to his banking school over. Oh god. Now I'm thinking should I short it, Because but I don't no, no, feel. no. See, the thing is, I also bought Kotak Bank, okay, like here for investment, yes area. If you Okay. remember the Hindenburg, RBI, हाँ हाँ they हाँ put हाँ. restriction, it gapped down 10. I bought in these areas,
And once that banker was appointed, I sold at 2000. Obviously, it Oh, went up from there again, but I still sold. I but yeah. shifted that to MFs, which Huh? are more banks focused. You Like diversified your risk HDFC. basically. Yeah. Huh. I also bought these at here. Sorry, here in these levels. You can see I already You marked it. hold on to your cash for a long time, right? That's what my understanding So is. these are, I think, I held this for 1.5 year. I held Kotak for 1 year. Hmm. That gave, these both gave like 30-40%. Oh, That's okay. over. I was bullish on banks weren't doing well. Okay. Now banks are doing well. Every bank posted good results. Yeah, except Kotak. That was my idea. So that is I the think issue, all. right? When because even HDFC has many subsidiaries and everything in it. Yeah. So I don't think it is like a one-time blame ki, subsidiaries No, no, didn't no, do no, well. no. So I talked to so many people because I was entering into futures and options, right? And this I had purchased the option for it, call option. Okay. So I was talking to a lot of people, very senior folks in banking as well. And for most of them, the answer has been that there is something wrong with the whole group entity as whole. But it's not Mm. a simple bank one-off thing. It's something fundamental that has gone wrong. So I was like, dude, couldn't be this bad, but it is. Even ICICI is now considered leader, right? For Yeah, after yeah, its yeah, rally. yeah, yeah, yeah. They posted also very below average returns. Like 15% they used to do deposit growth. Now they're doing below like single digit like other banks. So market didn't like it and it's down again. I think This there all are was other tailwinds as well, right? So for some banks, I think RBI has allowed some retail loans for IPOs, right? That's also another uh, yes, but macro see this in tailwind. this era, right? This whole 2024 year and 2023 ending year, only Hmm. this was doing 15% growth. All other banks were doing 3-4%. Okay, one thing because they delisted all the subsidiaries. If you see, right, they don't hold like Right. a lot of subsidiaries in. It is more banks focused. So it is more. It's well easier to analyze it. But Yeah. they gave it a premium. But now it's once the growth stops, you see sort of these distributions happening. That's the biggest issue If because if if you next quarter if it does 15% again, it'll get that premium again. true, 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 true. But yeah, I think so. The best strategy to get out of Kotak calls would be market open tomorrow, right? Or should I wait till I'm market not sure close? about options, man. Like stock price can do anything in the short term, right? Yeah, but I don't I'm know hoping what for to a say. gap down in Kotak that might pull down. I'm not sure if that's big enough to pull down the Nifty as whole, but Yeah. yeah. Kotak has been cutting I mean, this credit if you lines see right, aggressively with this retail year funds. Hmm. there was another bank, Axis Bank. Okay, Uh-huh. it posted was very bad results, but market still liked it. Like it reacted well, if you see, But because maybe it's because it already corrected a lot and it gapped or down a maybe the lot. guidance was good. I mean, I was hoping on Kotak to give a good guidance, but they screwed up that as well. So No, no. yeah, In fact, this was like ran Kotak the only. whole on I call. thought it would gap down, but maybe market already Priced it in. gave it a good correction. This gave no return, in fact. Only HDFC Kotak, in fact, gave some return. But the smaller ones are doing well, like the PSU banks, right? Yeah, Like RBL RBL is doing Bank, all this are even doing well. small finance is also doing well. Yeah, Um, small finances, ज़्यादा पिट गए, but these sort of banks are doing. I didn't buy this here because I already had too much allocation in other banks, like when investing. hmm. But this gave more return role because it's better, smaller bank. Yeah. Okay, yes. Banks right Other- now seem to find their top, but there are some setups that are still active in banks. I feel like so there are some places I where I think think it there is will some continue buying. the momentum. Might Yeah, have consolidation periods, but I think next banks buy could that. be IT. If it corrects more, I'm gonna buy it. This is what exactly happened. Like IT rallied a lot in 2024 when banks were falling. Okay, Hmm. banks were Yeah. making lower lows, lower all-time lows every time. But IT was Yeah. making higher. It's the opposite this year. Yeah. But this I think might I'm take a little more time fundamentally because it's international, right? Headwinds are a lot, tariffs and all. correct.
So this will take more IT time. essentially, the larger ones are more service based, right? But the Yeah. AI ones are still small. So I think Yeah, but I the but shift, the smaller ones have a higher value. The larger ones are less yeah, value. are less valued. But I think the only time it'll go up is either of the two things happen. The smaller ones show consistently good returns and they become large enough to be a substantial part, which seems like a possible story, but it would take time. Or the Mm. larger ones like Wipro and Infosys start adopting AI, actively adopting I AI. think So the then mid and obviously, small ones, right? They yeah, will continue to do well because they are yeah, still posting 20-25% growth. yeah. But there are I no was looking at entries there. persistent for that. Yeah. Yeah, but I wouldn't enter there. But yes, if IT corrects more, then I would enter. How long have you been in markets? 2 years, 2 years. And what was your background before that? Are you a full-time trader though? No, no, no. I'm a student, college. Okay, got it. I was normal only, man. I'm not that smart. College. और कुछ भी है डेमो देख ले Okay. Yeah. Any other queries you got, bro? Or you इधर want to है start? इधर No, no, चैट that's पे ही fine. Okay, okay. I think क्या है chat में? I invested 45,000 in June. It's now 3% over silver and return on some. Kotak has been cutting credit lines against its retail clients. अब मैं ट्रैक नहीं कर रहा पता बैंक्स I already have some holdings in it, but most of it I booked and shifted to MFs. So now it's more diversified. I don't care. Now yeah, but my the only problem with mutual funds is they take some percentage. That's the worst part. yeah, So but there's a mutual fund parag, right? So if yeah. whatever whoever exits, right? For example, there's an exit load. If you exit 2%, it's there. Within a year, that gets reinvested. So I didn't exit. So whoever exits, right? There'll be many investors. It's like the biggest AUM, right? So Uh-huh. or whatever the exits, they get 2%. 1.5% is reinvested into the fund, and then that return grows. So it's like that for them. Oh, And in HDFC FlexiCap, it's like it's less return only. Like what do you say? Less. Uh, what do you call that? Load and ratios, all that. exit load and yeah, expense ratios Unless are you book also it high. the first year itself. Yeah. I don't SIP. I do a lump sum whenever I feel like the market has gone down. Then I Yes, do a that's lump a sum. better way. That's a better way. That's I how do the I look same at thing. it. That's a better way. Yeah. But I did a lot of it while I was. Are there AI companies listed on BSE? Yes, there are. There are See, quite a the few, but they are thing very is, highly valued. if Fees if बहुत high हैं. if see, none of the Indian IT companies get any much revenue, like not even 1% from AI. But if it has to in the future, the big ones will obviously capture most of it. Like TCS, HCL, all these guys. So it's one of those industries where the big get bigger. That's why I don't look at small caps. Obviously, there's mid cap IT, right, which are at least large caps right now. Persistent. Yep. These might also get into this large cap space and capture Yeah, some I market do share. believe so. Yeah, I'm hoping that. Also, there is one more thing that can happen, and that's very plausible, right? That these smaller companies, if they're doing very well, they get acquired by the larger folks, and then See, there is some decent okay. value to be unlocked. Yeah. Are there any AI companies listed in this? No, there are no particularly AI companies. In fact, there's no single company which gets 10% revenue from AI. Uh, So, so you can imagine we are a more service-based company, not manufacturing. You gotta go, I think, to US or China. China, though, I think the markets are dead. I mean, individual stocks are dead there. So you have only US left. In US, you have multiple, companies which are into AI, only AI. are it? Yeah. Um, In fact, even these data center, right? They don't get most of their revenue from actual data center infrastructure. They get it from servicing 70% and then 30% is data. But they still get that valuation because there's no other peer, you can compare to in India. I mean, India is still lagging behind when it comes to AI part, right? So the best shot that you can have is, I mean, look at NetWeb for that instance, right? They just mentioned in their con call that they are working with NVIDIA.
on some chips, Yeah. and and just look up the chart. It's gone absurd. Network Yeah. securities. See, they say they collab with Nvidia, but then at the end, their revenue actually comes from somewhere else. Their profits a lot, Yeah, 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 but that hype that gets created. yeah. True. So true. There's no other company in like as a competition that you know. Hmm. Hmm. Uh, Hmm. If those come, then even 20% growth if they do, or even if they announce, they're gonna people the analysts will go recheck with other companies who are their competitors and stuff. But that will take time. That's true. yeah. Let's see. Like even let's say HCL, I think did some investments in AI, and they removed some staff or something, and the stock was up just for that Hmm. investment. True. The earnings are yet to come. I mean, before that, I thought it's down. Hmm. All right. और किसी का है query? No, larger companies. I think one that I found was crypto. No, I think Okay. that's all. But then I think it's 8 already, so we'll take last Trading. query and end it. Baki, you can ask in the server. We'll be always active. Yeah. We'll discuss only. पूछ ले आ गया Best question. tool to learn, best tools to learn and understand charts. TradingView is all you need, and then you can use chart link for scanners. And then are there any items? Okay. Idle number of stocks to hold in portfolio if not about max values. So if you're maintaining concentrated portfolio, then 10 to 15 stocks max. If you're maintaining diversified, then 20-25 stocks. So you would get the allocation per stock based on that. So let's say you're holding 15 stocks. I think it'll be like 5% each stock, but you can rebalance that. Like for example, like how mutual funds do. If they're bullish, like they usually put large caps 8-10%, and then the rest are like 2-3% only. If you want to go the aggressive way, then 5-6 stocks, but that has higher DDs and larger gains as well. I had like 3-4 max because my capital is small. 3-4, and 90% was allocated to top two stocks only. So you can. So yeah, you got to. Otherwise, you don't make anything from that small, like meaningful. Hmm. True. But yes, concentrated portfolio is 10-15 stocks. And these cannot be momentum, by the way. Concentrated cannot be momentum. If you're doing momentum, if your investment style is momentum, then you have to follow diversified. Otherwise, you again face higher DDs, drawdowns. If it's value, then you can work with 10-15. Hmm. All right. Cool. Thanks everyone. See RSI you. daily, 100 rupees on low value stocks. I mean, man, okay. ठीक है. I mean, MK, आप you can ask the rest of the questions in the chat. We have to conclude the session because already 8 बज गए. So yeah, you can ask in the server. We are available most of the time. Let's see. Yeah. So thank you so much for attending the session. Have a good night and bye bye. Thank you so much, everyone.